Hello, my dear students. You can never cross the ocean until you have the courage to lose the sight of the shore. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं एंड टॉपिक इज अगेन बिलोंगिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम. इसके दो बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं, दैट इज व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. एंड अभी आगे बढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स की तरफ, दैट इज नोन एज फीचर्स ऑफ ओपी और समटाइम्स इट इज आल्सो आइडेंटिफाइड एज पिलर्स ऑफ ओपी. So let's move into the detailings about what those interesting entities are. And हम लोगों ने ये जो डायग्राम है that is object oriented programming paradigm के pillars, and all of them are standing on the two important definition, and those two important entities are one is class and the other one is object. So we have defined already class and object. एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. So object is anything in real world which consists of states and behavior. To take this object in the programming, we need to take care of states and behavior. For taking care of states, we use variables. For behaviors, we use functions. According to principles of programming language, to use variables and functions, they must be declared and defined first. And the place where they are declared defined is known as class. So we call class as a blueprint, plan, template, or prototype of an object. An object is an entity of a class. And ये दोनों जब फंडामेंटली हमको क्लियर है, बिकॉज वी आर एन ऑब्जेक्ट, हम लोग अपने सराउंडिंग्स में इसके पिलर्स, इसके फीचर्स, इसके प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे. एंड दोज आर abstractions, then inheritance, polymorphism and encapsulation. बिग वर्ड्स है, डरना मना है, मैं हमेशा कहता हूं. इसको बहुत क्रिस्टल क्लियर करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट ईच वन ऑफ दैट. क्या क्या फीचर्स और इसके साथ जुड़े हुए हैं ये भी आपको पता चलेगा. सो यू कैन राइट द आंसर्स इन अ वेरी ब्रीफ सेंस एज वेल एज नॉट ओनली आंसर्स, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से आपके इंटरव्यूज में भी, एंड इनको यूज करोगे अप टू अ वेरी डिसेंट लेवल इनटू योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आल्सो. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट द इंडिविजुअल वंस. So the first feature that we'll be touching is all about encapsulation, right? So the word encapsulation says that hiding the internal states and requiring all the interaction to be performed through objects method. अभी जब ये टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं तो थोड़ा सा एंटिटी समझ में नहीं आ रहा है. So let us try to relate it with respect to the real world scenarios, तब इसको बहुत क्लियर कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एनकैप्सुलेशन में हम लोगों ने कैप्सूल करके वर्ड सुना है. वी आर यूजिंग दिस कैप्सूल्स, राइट? ओके, सो ये जो मेडिसिन है, कैप्सूल है, इसके अंदर दिस इज द मेडिसिन, राइट? एंड दिस इज कवर्ड विथ ईटेबल प्लास्टिक कोटिंग. सो इफ आई वांट टू लुक टुवर्ड्स दिस कैप्सूल विथ रिस्पेक्ट टू एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, ये जो कैप्सूल के अंदर का मेडिसिन है दैट इज बीन कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव कवरिंग. सो मेडिसिन तक पहुंचना ये इंटेंशन है या मेडिसिन तक पहुंचने नहीं देना ये इंटेंशन है. सो आप कहोगे सर मेडिसिन तक पहुंचना तो इंटेंशन है, बट यहां पे फिर उसको कवर क्यों करके रखा है? बिकॉज देयर शुड नॉट बी अ डायरेक्ट रीचेबिलिटी टू द मेडिसिन. इसको हम लोगों ने प्रोटेक्टिव कवर के अंदर रख दिया सो दैट अगर किसी को रीच भी करना है तो इनडायरेक्ट वे से इस तक रीच कर पाए. एंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज व्हाट? एनकैप्सुलेशन. तो ये अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें जुड़ी हुई है. वन इज स्टेट, अदर वन इज बिहेवियर. सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज गॉट अ टेंडेंसी टू हाइड इट्स स्टेट्स. इसीलिए इस फीचर को, इस पिलर को हम लोग कहते हैं डेटा हाइडिंग आल्सो. डेटा हाइडिंग, और एक और भी नाम है दैट इज नोन एज व्हाट? डेटा एनकैप्सुलेशन आल्सो. सो व्हाट डू वी डू इन दिस केस इज ऑब्जेक्ट के जो स्टेट्स रहेंगे, स्टेट्स, एंड वी नो दैट दिस स्टेट्स वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वेरिएबल्स.
एंड ये जो ऑब्जेक्ट के स्टेट्स है, वेरिएबल्स है, इनको प्राइवेट रखेंगे सो दैट दे कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द क्लास, बाहर से उनको डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर पाए. बट डेफिनेटली देयर शुड बी अ वे थ्रू दैट वी कैन गो ऑन एक्सेसिंग दिस. पर अगर ये प्राइवेट बने तो यू कैन नॉट गो ऑन एक्सेसिंग दैट. एंड इन दैट केस व्हाट डू वी डू इज, हम लोग उनको इनकैप्सुलेट करते हैं, उनको एक प्रोटेक्टिव कवरेज देते हैं, एंड दैट प्रोटेक्टिव कवरेज इज ऑफ पब्लिक फंक्शंस. एंड इन फंक्शंस के थ्रू ही आप इन स्टेट को एक्सेस कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शंस आर नोन एज accessor functions as well as mutator functions, right? तो ये accessor and mutator functions, this is more technical terms. एंड अगर आप जावा के साथ देखते हो या पाइथन के साथ बेटर टर्मिनोलॉजीज के साथ चलते हो, सो एक्सेस करना मतलब दिस वैल्यू को रीड करना, गेट करना, सो दैट फंक्शन इज आल्सो नोन एज गेटर. एंड इसको म्यूटेट करना मतलब चेंज करना, तो इसके वैल्यू को सेट करना है, सो दोज फंक्शंस आर नोन एज व्हाट, सेटर्स, राइट. सो बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी. हम लोगों को ऑब्जेक्ट के स्टेट मतलब वेरिएबल को रखेंगे व्हाट, प्राइवेट, एंड टू प्रोवाइड एक्सेस टू देम हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सेस ब्लॉक कर दिया. सो व्हाट डू वी प्रोवाइड इज, वी प्रोवाइड द इनडायरेक्ट वे to access those states with the help of functions, and these functions are known as getters and setters. This is how the encapsulation works. So direct accessibility is avoided, and instead of that a very fruitful indirect accessibility is provided, so that the states and the methods binds together. So this is also known as data binding, also data hiding, also data encapsulation, also as well as encapsulation. So बहुत ही बढ़िया concept है, and this concept is totally dedicated for what, state hiding. तो अभी जाके ये definition बहुत अच्छे से पता चलेगा. Hiding the internal state and requiring all the interactions to be performed through what, objects, methods. So methods के through, functions के through इन states तक हम लोग पहुंच पाएंगे. सो ऐसा क्यों करना है? सो आउटसाइड से डेटा के मिसयूज को रोकने के लिए, राइट. सो यहां पे प्रोटेक्ट द डेटा यूजिंग व्हाट, एक्सेस मॉडिफायर्स. सो लेट्स कीप द डेटा प्राइवेट, एंड अगर किसी को एक्सेस करना है तो एक ऑथेंटिक वे से उसको एक्सेस कर पाए विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फंक्शंस. सो वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट अबाउट व्हाट, encapsulation, right? So now let's look into the next matter, that is next feature, that is inheritance. Do you agree that ये अपने से closely connected है? We all are inherited objects. हम लोगों ने अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एक्वायर कर लिया, by choice or by compulsion. So you can say like yes, it's by compulsion. So very compulsive pillar of real world as well as compulsive pillar of object oriented programming paradigm also. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड यहाँ पे वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट, जब इनहेरिटेंस को देखना है तो पहले ये जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या क्या ओओपी में अपने को प्रोवाइड कर रहा है. व्हाट आर द फीचर, अदर फीचर्स दैट आर गेटिंग कनेक्टेड विद व्हाट, इनहेरिटेंस आल्सो. सो सबसे पहले एन इंटरेस्टिंग फीचर इज वन ऑब्जेक्ट वांट्स टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, एंड ये जब करना है तो अपने को इनहेरिटेंस का जरूरत है. So being an object, हम लोगों ने अपने parent के properties को acquire किया. So one object wants to acquire the properties of another objects, and for that purpose we need inheritance. Next to that, do you agree that in real world each and every entity works with the hierarchy? आप आपका फैमिली ट्री देखो, उसमें हायरार्की है. कॉलेज का वर्किंग सिस्टम देखो, उसमें हायरार्की है. गवर्नमेंट का वर्किंग सिस्टम देखो, उसमें हायरार्की है. ईच एंड एवरीथिंग वर्क्स ऑन द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर. सो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स को अगर मेंटेन करना है, सो वी आर इन नीड ऑफ इनहेरिटेंस. सो दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ यूजिंग इनटू द प्रोग्रामिंग. फॉर एग्जांपल, वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर कॉलेज, एंड उस कॉलेज में अलग अलग क्लासेस को रखना पड़ेगा अलग अलग लेवल्स के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द हायरार्की दैट दे पोजेस. सो हायरार्चिकल डेवलपमेंट अगर करना है तो हम लोगों को चाहिए द यूज ऑफ व्हाट, इनहेरिटेंस. सो वेरी ब्यूटीफुल बुलियर. वन मोर एस्पेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, रीयूजेबिलिटी. तो क्या है रीयूजेबिलिटी? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इफ वी हैव द एग्जिस्टिंग एंटिटी एंड हम लोगों को इसको मॉडिफाई करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस इसके अंदर करने हैं. So what OOP suggests is डायरेक्टली जाके इसको मॉडिफाई मत करो, इसको इनहेरिट कर लो. Once you inherit it,
इसके अंदर के सारे प्रॉपर्टीज ये नए एंटिटी में आ जाएंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू गो ऑन व्हाट मेकिंग मॉडिफिकेशंस. सो कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट रीयूजेबिलिटी एज वेल एज इसी इनहेरिटेंस का यूज आपको करना पड़ेगा टू मेंटेन पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो एंड दैट इज नोन एज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म. आगे जाके पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस ही करने वाले हैं. सो पॉलीमॉर्फिज्म राइट. सो इनहेरिटेंस बहुत ही बढ़िया पिलर है जो और चार एंटिटीज को टच करता है. वन ऑब्जेक्ट वांट्स टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट to represent hierarchical structure of real world into programming we need inheritance. reusability का concept को deploy करना है we need what inheritance and dynamic polymorphism को apply करना है तो we need inheritance. So this is a very interesting pillar. Please observe one class child or derived inherits the properties and behaviors from what another class known as what parents or superclass or a base class, right? Okay, and it goes on promoting what code reusability. So बहुत ही बढ़िया feature of OP, that is what inheritance. Now let's move into the next one, that is next feature, and that feature is polymorphism feature. ये Greek word है and definitely you could be able to enjoy the concept with once we are able to understand its tagline, right? So poly means many and morph जो word है that is indicated as what form. So any entity if it is establishing more than one form then that particular entity is known as polymorphic entity. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा फॉर्म एस्टैब्लिश कर रहा है, कोई भी एंटिटी एक से ज्यादा फॉर्म एस्टैब्लिश कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिक एंटिटी. एंड यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे allows the object to behave differently based on their class and produces what multiple forms. एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है, राइट. राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग द फॉर्म ऑफ ट्रेनर एंड आई एम गिविंग यू द ट्रेनिंग based on my knowledge about the object oriented programming paradigm. Once this session is over, I'll be transferring my form into something else. So you also are playing multiple forms in your life. So we are polymorphic object because we go on establishing what more than one forms. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के तौर पे पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे देख पाएंगे. प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म इज डिवाइडेड इनटू द टू मेजर डोमेन एंड एक कहेंगे हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म and second is known as what runtime polymorphism. And this compile time polymorphism also known as static polymorphism and runtime polymorphism is known as dynamic polymorphism. There is another name given for compile as well as runtime polymorphism and this is known as early binding and this is known as late binding. राइट. एंड यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों को स्टडी करने पड़ते हैं जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन बिकॉज हियर इन द प्रोग्रामिंग यू कैन बी एबल टू यूज अ सेम फंक्शन नेम which goes on behaving in different way depending on the call. So एक ही फंक्शन आपके लिए अलग अलग फॉर्म्स में रोल प्ले कर रहा है एंड द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. So this is again one of the great feature that has been supported by object-oriented programming paradigm, right? Okay, one more feature is there, and that particular feature is, and the next feature comes as what abstraction, a very interesting one. Tagline के तौर पे देखेंगे, hiding complex implementation details and provide only what interfaces. Let me connect it with real world तो आप समझ पाओगे कि ये कॉन्सेप्ट मतलब अपना डे टू डे लाइफ का इसेंशियल कॉन्सेप्ट है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार एंड इस कार को ड्राइव करने के लिए यू हैव द इंटरफेसेस एज ए बी सी एंड आपके हाथ में है स्टीयरिंग. यू आर यूजिंग एक्सेलरेशन, यू आर यूजिंग ब्रेक, यू आर यूजिंग क्लच एंड देन you are using the steering as well as gearing mechanism to drive the car. But when you are driving this car, जब भी आप एक्सेलरेशन पैडल को प्रेस करते हो, डू यू थिंक दैट कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे है? 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, कितना फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है? नो, नो एंड नो. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रेसिंग दिस एक्सेलरेशन पैडल एंड एंजॉइंग द ड्राइव.
when we are pressing the brake pedal, are we thinking about disc brake hai, drum brake hai, power brake hai, air brake hai? No, we are least bothered about implementation detail. We are more genuinely interested in stopping the vehicle just by using the interface. So अपने से critical complex implementation details hide किए हुए हैं and अपने को सिर्फ interface के रूप में ये use करने के लिए दिए हैं. Whenever you are using the clutch mechanism, are you thinking about how this is managing the different gear systems? So no, we are not thinking about, we are just using this interface, and complex implementation details are hidden from us and humko diye hai sirf what? Interfaces. And the person who even doesn't know the spelling of acceleration, do you agree that that person can also drive the vehicle? Yes, and that beauty is possible because of what? Abstraction only. कि उससे कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करके रखा है एंड उसको सिर्फ दिया है ये इंटरफेसेस यूज कर लो. जब भी हम लोग स्टीयरिंग यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट ये पावर स्टीयरिंग कैसे वर्क हो रहा है, how much torque it is using for moving the vehicle, rotating the vehicle. No, nothing, no technical detailings we want to know. We are just interested in using what? Interfaces. So बहुत सारे complex details hide करके सिर्फ useful interfaces देना, the concept is known as what? Abstraction. And आप देखोगे, आप जितने भी entities को use कर रहे हो, and if you don't know their implementation details, इसका मतलब आप abstraction को use कर रहे हो. So nice pillar, and इस pillar के हिसाब से we are able to use n number of complex things because we are not interested in going into the implementation details. पर हम लोग सिर्फ interfaces को use करके उनको use कर रहे हैं, right? Okay, and that way it goes on reducing what? Complexities. As well as इन चार major pillars के अलावा there are some features like reusability, तो हम लोगों ने discuss कर लिया inheritance में. There is a concept known as message passing. One object is calling the function of another object, passing some information from one object towards the another object. Concept is known as message passing. And ये जो सारे के सारे features है, ये जो pillars है, they are going to help us to build a very robust and scalable system. And that's why these pillars, these features are going to play the major role in application development with the help of object-oriented programming paradigm. I hope कि you understand this in a very brief way कि how these pillars are related with object and class. And believe me, entire features of OP, they are going to revolve around what is an object and what is a class. So यहाँ पे I feel like we know object, we know class, we know all other features of object-oriented programming in a very decent way. And now it's a time to go on working into the practical way how to write a class and how to create an object and फिर इन entities को कैसे touch करेंगे. So that's it from my side about this theoretical discussion about features of object-oriented programming or pillars of OOP against objects and classes. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.